Hi my dear students, today we are going to discuss another chapter, the seventh chapter of history, the Vijayanagara and the Bahmani kingdoms. The last class we are discussed regarding the Delhi Sultanate. So after the decline of Delhi Sultanate, the Vijayanagara empires started. The rise of Vijayanagara Empire. The Vijayanagara Empire is founded in 14th century. 14th century में विजयनगरा Empire शुरू हो गया and you can see the map here, brownish color given, that is Vijayanagara Empire. Vijayanagara Empire's northern side, this side, northern side is Krishna River and northern side is Krishna River से शुरू होकर extreme south तक, it means complete South India में it is covered Vijayanagara Empire. It means Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh. These are the places, these are the states are included in the Vijayanagara Empire. And the main cities of Vijayanagara Empire is the first one, Hampi. Hampi is the capital of Vijayanagara Empire, and another three main cities are the Raichur, Anantapur, and Penikonda. These are the main cities in the Vijayanagara Empire. Here you can see two peoples. It means Harihara and Bukka, the brothers. In 1936, these two brothers built the city of Vijayanagara kingdom. Harihara assigned the throne to in 1336 and ruled for next 20 years. First brother, big brother is Harihara. He started ruling in 1336 and इसने rule किया around 20 years तक rule किया. And he established order with the kingdom and organized into new subdivisions of villages. So इसने क्या किया, इस जो इस हरियाणा का अंडर विजयनगरा एम्पायर शुरू हो गया, इसके पहले इसने क्या किया, विजयनगरा एम्पायर इज डिवाइडेड इन स्मॉल सब डिविजन में डिवाइड किया विलेजेस की तरह, और इसके एक विलेज को हेडर्स भी दे दिया, एक हेडर भी दे दिया. सो इजी टू रूल इजी करने के लिए. सो आफ्टर द डेथ ऑफ Harihara and Bukka took over the and ruled till 1377. So हरिहरा के मरने के बाद, डेथ होने के बाद बुक्का इसका विजयनगरा एम्पायर का रूलर बन गया till 1377 तक. And gradually all of the South India, and he was brought under his rule. Normally he fought with the other places and complete South India is under me. So it means he fought nearby the places and captured complete South India. Kingdoms of Vijayanagara. Vijayanagara agreement में 16 rulers are there. Total 16 rulers are there and 4 dynasties. And they are ruled in 230 years. It means 4 dynasty में 16 rulers विजयनगरा empire बन गया. So total kingdoms, Vijayanagara kingdoms ruling year is 230 years. So here we are giving 4 dynasties. Name is here. First dynasty is Sangama dynasty, Saluva dynasty, Tuluva dynasty, and Aravidu dynasty. So Sangama dynasty is 1336 to 1485, and Saluva dynasty is 1485 to 1505. Tuluva dynasty 1505 to 1565, and Aravidu dynasty it is 1542 to 1646. Total 230 years these 4 dynasties and 16 rulers ruled. Here we can see
Krishnadevaraya. Krishnadevaraya, Vijayanagara Empire is the greatest ruler. The विजयनगर एम्पायर में सबसे खतरनाक राजा था कृष्णदेवराय. He is the greatest ruler of तुलुवा डायनास्टी. प्रीवियस डायनास्टी में हमने एक स्टडी किया है, संगमा, सलुवा, तुलुवा एंड अरविंद. ये तुलुवा डायनास्टी में एक किंग था कृष्णदेवराय. And he ruled from 1509 to 1530. 1509 to 1530 तक इसने रूल किया. It was under his region that Vijayanagara kingdom reached to height its glory. सबसे विजयनगरा एम्पायर इसका सबसे ऊंचे तक पहुंच गया जब कृष्णदेवराय रूल किया था. His famous conquests including capture of Raipur fort in the Raichur Doab in 1512. इसने इसका फेमस कॉन्कर कैप्चर्ड फाइटिंग विद अदर पीपल. रायपुर फोर्ट इसने पकड़ दिया. रायपुर फोर्ट इसने पकड़ दिया. कौन सा रीजन में? 1512 में इसके अंडर किया है. दिस डोब वाज फर्टाइल रीजन बिटवीन रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा. तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर के बीच में बढ़िया जगह था, फर्टाइल लैंड था. इट इज दैट एरिया इज कैप्चर्ड बाय कृष्णदेवराय. And he is a good administrator because he wanted to tour to ensure that to the people in the kingdom they are happy and the officers were performing their duties honestly. जो इसने क्या करेंगे, इसने बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर था, क्योंकि इसने इसका विजयनगरा एम्पायर पूरा घूमेगा और ये इंश्योर करेगा सभी द पीपल आर लिविंग इन दिस किंगडम ऑल आर हैप्पी. वो चेक करेगा और ऑफिसर्स उसका काम बढ़िया कर रहे वो भी चेक करेगा. सो ही इज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर. एंड कृष्णदेवराय एनकरेज्ड फॉरेन ट्रेड. He is encouraged foreign trade with the Portuguese who had established trade centers on the Malabar coast. इसने foreign trade बहुत encourage किया है और जो पोर्चुगीज के साथ ट्रेडिंग करने के लिए मलबार कोस्ट में बहुत सारा importance दे दिया. This led to improved trade to source of revenue for the state. इसके कारण से foreign trade के कारण से इसका revenue टैक्स कलेक्ट करके पैसा मिल गया इसको बहुत. And he is also Krishnadevaraya paid attention to agriculture. He is also given attention to agriculture. He is also developed facilities for the farmings and building dams and canals. So agriculture में बहुत सारा importance दे दिया है and इसने farming के लिए buildings बनाए, dams बनाया and canals बनाया for the farmers. And another point is that Krishnadevaraya was a greatest patron of art. Art, poetry and music also is very interesting. He was a great scholar of Telugu and Sanskrit literature. Another one is that Krishnadevaraya was also a great builder. His region saw construction of famous temples and Asra Rama temples in Hampi. These are the greatest temples also he's made. And another point we are moving, achievements of Vijayanagara empires. What are the achievements done by Vijayanagara empires in different rulers, under different rulers? First one, administration. Hampi was the capital of the Vijayanagara empire. Vijayanagara empire capital Hampi tha, and the king was a supreme authority of all the matters of administration. किंग सबसे सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे अधिकारी कौन था? किंग है. एंड नेमली सिविल, मिलिट्री एंड जुडिशियल मैटर्स में सबसे अधिकारी किंग था. एंड द किंग वाज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. किंग वाज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. किंग के नीचे एक काउंसिल था, मिनिस्टर्स का एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स था. द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड mandalas. So इसके नीचे
एक एम्पायर में आपको पता है विजयनगर एम्पायर इज बिगेस्ट वन. इट इज डिवाइडेड स्मॉल स्मॉल मंडलास, स्मॉल स्मॉल एरियाज डिवाइड कर कर इसका हेड भी बना दिया. सो एक एक डिस्ट्रिक्ट को क्या कहते हैं, मंडलास कहते हैं, मंडल्स. Further, it is divided into districts and sub-district also. So, provinces divided, mandalas divided district and sub-district also.